Assalamu alaikum. This is English A class for grade 6. This is first lecture of lesson 5. Open your book, come to the page number 22. Write CW date and day at the top of the page. The lesson we are going to start is lesson 5, Achu. This is very interesting and enjoyable story of a king and his servants. Let's see what happened in the story. Look at your first paragraph. One fine day, in the land of green hills and blue streams, the king awoke, leaped from his bed, and ran to the window. Throwing open the shutters, he leaned out and took a deep breath of the fresh spring air. एक सरसब्ज और खूबसूरत दिन बादशाह जागा और लंबा फ्रेश सांस लेने के लिए विंडो की तरफ चला गया. Ah, just smell those flowers blooming, he said, and promptly sneezed when some pollen tickled his nose. Pulling his head back in, he went to find a handkerchief. Ah, उसने फ्लावर्स की खुशबू जैसे ही सूंघी तो कुछ पोलन मीन्स फ्लावर्स की डस्ट किंग के नोज़ में चली गई, जिसकी वजह से किंग ने स्नीज मीन्स छींक मारी और अपना हैंकरचेफ यानी रुमाल ढूंढने लग गया. In the next room, the king's butler heard the sneeze. Ah, the king must have a cold. I will tell the cook to make him a soothing broth. So the butler went down to the kitchen. बादशाह की छींक उसके बटलर मीन्स मुहाफिज ने सुन ली और सोचा लगता है किंग को सर्दी लग गई है, तो वो उनके लिए सुकून बख्श सूप बनवाने के लिए नीचे चला गया. कुक सेड द बटलर, द किंग हैज़ अ टेरेबल कोल्ड. मेक हिम सम ब्रॉथ एट वंस एंड टेक इट टू हिम. उसने कुक से कहा कि किंग को सख्त सर्दी लग गई है, उनके लिए यखनी बनाओ. So the cook set about making a broth for the king. Ah, she said, I have run out of parsley. I will send the pantry girl to pick some from the garden. The cook called the pantry girl into the kitchen. Girl, go to the garden and gather some parsley for the king's soup. He has caught pneumonia and must be treated at once. तो कुक यखनी बनाने लग गई. अचानक उसे याद आया कि पार्सले मीन्स अजवाइन ख़त्म हो गई है, तो कुक ने पेंट्री गर्ल को किचन में बुलाकर कहा कि किंग को नमूनिया हो गया है, गार्डन में जाके पार्सले लेकर आओ ताकि किंग का सूप रेडी हो सके और उन्हें इससे आराम मिल सके. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, focus on their spelling, pronunciation and learn them by heart. Leaped, leaped. Shutters, shutters. Leaned out, leaned out. Blooming, blooming. Promptly, promptly. Tickled, tickled. Handkerchief, handkerchief. Butler, butler. Soothing broth, soothing broth. Terrible, terrible. Parsley, parsley. Pantry, pantry. Pneumonia, pneumonia. Okay students, now it's time to write homework diary. Read page number 22 and 23 with translation 5 times. Learn difficult words with spelling and do practice in your AR. Thank you. Allah Hafiz.